They belonged to the ideology that had no role whatsoever in our freedom movement, that had no role whatsoever in the making of our constitution. नमस्कार मित्रों, भारत को आज़ादी दिलाने वाले नेता के तौर पर महात्मा गांधी को याद किया जाता है। ठीक उसी तरह आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने जवाहरलाल नेहरू की इतनी आलोचना सुनी होगी कि कई बार ऐसा लगता है कि जो नई पीढ़ी के बीच में उनको लेकर धारणाएं बदल रही हैं। लेकिन क्या नेहरू के प्रशंसक, नेहरू को जानने वाले, इस देश की राजनीति को समझने वाले, इस देश के इतिहास को जानने वाले नेहरू के योगदान को भुला पाएंगे? शायद नहीं। और इसीलिए नेहरू को लेकर कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के एक नेता शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और वो लगातार नेहरू पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर विचलित हैं और नेहरू को नई पीढ़ी के बीच में, उनके विचारों को नई पीढ़ी के बीच में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। और इसी सिलसिले में नेहरू केंद्र भारत की ओर से कल एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रमुख नेत्री सोनिया गांधी ने भी हिस्सा लिया और जब सोनिया गांधी के बोलने की बारी आई तो सोनिया गांधी ने बहुत ही साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास की, जो मौजूदा सत्ता है, नेहरू के विचारों को रौंदने, नेहरू के विचारों को लेकर एक भ्रम फैलाने को लेकर सीधे करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू पर ये जो आक्रमण हो रहे हैं उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों का आज़ादी दिलाने में कोई योगदान नहीं है, जिनका अभी जो संविधान बना है, जिस संविधान पर भारत चलता है, उसके निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है, वो लोग आज नेहरू की आलोचना कर रहे हैं। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनिया गांधी का ये भाषण बड़ा दिलचस्प है। इस मंच से कुछ और वक्ताओं ने अपनी बात रखी थी, खासतौर पे अशोक वाजपेयी ने, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। वो वीडियो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। जो नेहरू को समझने वाले हैं उनको मालूम है कि भारत के निर्माण में, जब भारत जिस रूप में आज़ाद हुआ था और उस वक्त जो भारत के सामने समस्याएं थी, उसको लेकर आगे बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत का निर्माण कैसे होगा, भारत के लोगों की हालात कैसे सुधरेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, कृषि के क्षेत्र में क्या होगा, उद्योग के क्षेत्र में क्या होगा, कैसे इस देश को आगे बढ़ना है, ये कौन तय करेगा। ये सारी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और उनके साथियों ने निभाई और कदम से कदम मिलाकर उन नेताओं ने इस देश को बनाया है। सोनिया गांधी ने उनके इन योगदानों की चर्चा की और नेहरू के विचारों को लेकर एक जो चुनौती सामने आई है उसकी चर्चा की है और इसीलिए ये भाषण बड़ा दिलचस्प है। ये भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने ये वीडियो इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि नेहरू के विचारों को लेकर चलने वाले या नेहरू के विचारों को समझने वाले या आज़ाद भारत में एक निर्माण का जो इतिहास रहा है उसको समझने वाले जान सकें कि इस वक्त के नेताओं में किस तरह की बेचैनी है जो हमले नेहरू के विचारों के ऊपर हो रहे हैं उसको लेकर, और कैसे वो नेहरू के उन विचारों को आने वाली पीढ़ी या मौजूदा पीढ़ी के बीच में उस सत्यता को स्थापित करने के लिए बेचैन है। It is a pleasure to be with you all this evening to celebrate the memory and contributions of our first Prime Minister. And I really enjoyed, and I'm sure you have too, listening
to both Purushottam Agarwal ji and Shri Ashok Vajpayee ji and Sandeep too. Wonderful stories and remembrances. Thank you. Jawaharlal Nehru was the prime architect of the modern Indian nation state. His was a life anchored firmly in parliamentary democracy. He had a steadfast belief in planned economic growth, a profound commitment to the development of scientific temper, alongside the development of scientific and technological capabilities. To him, secularism, in which he firmly believed, meant above all the celebration of India's many diversities while strengthening its fundamental unity. His legacy continues to shape our everyday lives. Decades have gone by since his time, but he continues to serve as a beacon light to millions of our countrymen and women. It is inevitable that such a monumental figure will have his life and work analyzed and critiqued. That is indeed as it should be. Although the temptation to divorce him from his times and the challenges that he had to face, and to look at him devoid of the historical context in which he functioned, has become quite widespread. Yet, while we welcome ongoing analysis of his contributions, what is not acceptable is the systematic attempt being made to denigrate, distort, demean, and defame him. The sole objective of this is to not only diminish him as a personality, his universally recognized role in India's independence struggle, and his early decades as a leader of an independent nation challenged by unprecedented problems. But it is also to demolish his multifaceted legacy in a crude and self-serving attempt to rewrite history. Analysis is one thing, but deliberate mischief with what he said, what he wrote, and what he did is another thing, and totally unacceptable. And who are the forces that have launched this project? We all know that they have been worked for years and years, for decades, and finally, here they are. They belong to the ideology that had no role whatsoever in our freedom movement, that had no role whatsoever in the making of our Constitution. In fact, they even burnt it. They were totally against it. It is an ideology that long ago fanned an atmosphere of hate that ultimately led to the assassination of Mahatma Gandhi. His killers today continue to be glorified by its adherents. It is an ideology which has consistently rejected the ideals of our founding fathers. It is an ideology with a bigoted and viciously communal outlook. Its approach to nationhood is based on stoking prejudices of all kinds. Let there be no doubt whatsoever that the project to vilify Jawaharlal Nehru
is the main objective of the ruling establishment today. Their goal is not just to erase him, it is actually to destroy the social, political, and economic foundations on which our nation has been founded and built. The road ahead is not easy, but there is simply no option but for each one of us, individually and collectively, to stand up and confront this project. We not only owe it to the memory of Jawaharlal Nehru and his comrades, we owe it to ourselves and even more to coming generations. The unapologetic and fierce defense of the Nehruvian legacy, it is not an act of nostalgia. It is a commitment to restoring India's constitutional promise, to safeguarding reason in the face of propaganda, and to ensuring that our republic remains modern and forward-looking. If we succeed, it will not only honor Jawaharlal Nehru's memory, it will ensure that the India he envisioned remains a reality. At a time when tolerance in public life is shrinking, when dissent is painted as disloyalty, and history is reduced to partisan combat, Nehru's example becomes even more vital. He taught us that disagreement is not a threat, but a democratic necessity, that unity does not demand uniformity, that a confident nation need not fear the truth about its past. Friends, there is some reason for hope. Last month, the Jawaharlal Nehru Memorial Fund also launched an archive which can be accessed to nehruarchive.in. The archive is an easily searchable and freely downloadable digital archive. Also, by the way, accessible on your smartphone. At present, it covers the 100 published volumes of his selected works covering the period 1903 till the day before he died. The archive will continue to get expanded. So there it will be for you all to access anytime you want to know something about what he said, about what he wrote, or what he did. So Sandeep Dixit's initiative, which has brought all of us all here this evening, is another sincere attempt to take on this challenge of rescuing Nehrus from the web of deception. And we need many, many more such initiatives across the length and breadth of our country. I will end by congratulating Sandeep and his team and wishing him and his colleagues the very best in their endeavors. Thank you all. Jai Hind. Very well said.